Jai Jagannath. Honorable Union Minister Education Sri Dharmendra Pradhan Ji, Honorable Minister Electronics and Information Technology Dr. Mukesh Mahaling Ji, Honorable Minister of Higher Education Sri Satyavamshi Suraj Ji, CEO Global Finance and Technology Network Singapore, Mr. Sapnendu Mohanty, MD and CEO Bajaj Allianz, Dr. Tapan Singhel Ji, Principal Secretary Electronics and IT Sri Vishal Kumar Dev, Commissioner cum Secretary Higher Education Arvind Agrawal, two Honorable Member of Parliament present here, Honorable MP Kandhamal Sukanta Prangrahi, and Honorable MP Jajpur Dr. Ravindra Narayan Behera. Namaskar and a very warm welcome to everyone. It is a proud moment of Odisha to launch the integrated global financial technology capability of Bharat Netra, a one vision, one finance and one future visionary initiative set to reshape our state's future in finance and technology. Today, Odisha is taking a bold step that will strengthen India's leadership in the fast-growing digital economy. The hub represents a landmark partnership between the government of Odisha and the Global Finance and Technology Network, Singapore. This partnership was developed during the historic visit of the Honorable President of Singapore, Mr. Tharman Shanmugaratnam, who came to Odisha in January this year. It is an expression of our strong commitment to open Odisha to the world and bring the best opportunities to our states. With this initiative, we are committed to skill more than 7,000 students from all 30 districts of Odisha through globally recognized certification programs designed by the Asian Institute of Digital Finance at the National University of Singapore. यह प्रयास हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें युवाओं को नयाचार और कौशल से सशक्त बनाने की बात हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 79वां स्वतंत्रता दिवस भाषण में रेखांकित की थी। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का प्रमुख रोजगार योजना तथा 3 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की। ओडिशा इस प्रेरणादायी राष्ट्रीय प्रयास को पूर्ण सहयोग देने के लिए आज तैयार है। Our approach to skilling is historic and focused on future. Nearly 180,000 students graduate every year from engineering, polytechnic, and IT streams in Odisha, and our 950 ITIs are building a strong talent pipeline for tomorrow. Our World Skill Center in Bhubaneswar is already be benchmark for global standard training. The IGFT will add to these strengths, offering specialized skilling in fintech,
initiative, blockchain and AI in finance. Killing our youth is crucial, but we must also invest in research and innovation. Odisha has established new center of excellence, including the Deep Neural Network Laboratory, to support advanced research. Our ambition is to make Odisha the research capital of the East. I am glad to highlight that Odisha has recently received cabinet approval from the central government for India's next two major semiconductor projects, such as 6M having investment of rupees 2,066 crore and 3D Glass having investment of rupees 1,943 crore, placing our state at the core of the global electronics and semiconductor supply chain. Together with our electronics manufacturing clusters at Infoveri Bhubaneswar, the semiconductor project will create thousands of high-value jobs and exciting opportunities for our youth in research, chip design, and fabrication. Semiconductors are the foundation of the digital economy, and Odisha is proud to take a leading role in this national mission. Within the hub, a dedicated center of excellence will nurture startups and entrepreneurs in the state of Odisha. इस परियोजना के अंतर्गत एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जो हमारे राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और एक निवेशों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख द्वार के रूप में ये कार्य करेगा। ओडिशा के लोगों की ओर से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके दूरदर्शी नेतृत्व और ओडिशा के लिए जो प्रमुख सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की कैबिनेट स्वीकृति है, हेतु मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। To support these efforts, we are investing in digital infrastructure. A new cable landing station linking Bhubaneswar and Singapore is being built. This will greatly boost connectivity and help Odisha become an attractive destination for global technology investments. We are also developing our tech ecosystem with 4 STPIA centers in Bhubaneswar, Rourkela, Paleswar and Brahmapur. These centers empower our entrepreneurs to reach global markets in IT and IT-enabled services. Odisha now hosts more than 500 IT and ITS companies, creating jobs for almost 60,000 professionals. Our startup ecosystem has grown to over 1,500 startups supported by more than 50 incubators. Odisha has decided policies for IT, electronics, semiconductors, data centers, and BPOs, and recently became the first state in India with a dedicated artificial intelligence policy. We are using AI to solve problems faced by ordinary people. So we will launch new policies for fintech and global capability centers aimed at attracting even more global investments. All of these efforts support our vision 2036 and 2047 goal to build a $500 billion economy by 2036 and $1.5 billion economy by 2047 for the state of Odisha. This will make Odisha to become one of the top 5 Indian states in terms of
पर कैपिटा इनकम। आज निश्चित भाव में मुझे दि शब्द ये उपस्थित थी मोर संभावनार समस्त जो भाई और भौणी मैंने ये उपस्थित अच्छा एवं उपस्थित थी समस्त प्रधानमंत्री को आज ये कार्यक्रम जहाँकि आज आम ओडिशा पई एक नुआ सुजोग आनी देछि आ ये सुजोगर आज डबल इंजन सरकार रे एवं विशेष करके आज आमको ये जो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सहित आज जेभली भाव में विशेष करके सिंगापुर सहित आमर गोटे सहबंधित हवा सहित संपर्कर गोटे नुआ विकासर रास्ता को टेक्नोलॉजी सहित जेभली भाव में आमे रोड शो करने जो सिंगापुर को जाइलु सेठिकार सरकार सहित सीधा सड़क आलोचना हवा परिप्रेक्षी से आम सहित जेभली भाव में एक सौहार्द वातावरण भितर सिंगापुर एवं भारत भितर विशेष करके इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी उपरे गुरुत्व आरोप करवा एवं ताहा सहित आम पिला किभली भाव में वर्ल्ड क्लास स्किलिंग एम्पावरमेंट करवा एवं से पिला को एक विश्वस्तरीय से स्टैंडर्ड तैयारी करवा एवं से समस्त कंपटीशन रे जेभली भाव में योग्यता बनैबा जहाँकि अनेक समय आम देखीचु जे आम पिला माने जो माने हमर वर्ल्ड स्किल सेंटर रे एठी शिक्षा नौछंती समाने जेतेबेले विश्व स्तर जेकोसी एक प्रतियोगिता कंपटीशन रे भाग नौछंती समाने स्वतंत्रता अर्जन करिबा गत वर्ष आमे समानको आमे पठेइथिलु यूरोप को सेठी समाने प्रतियोगितार भाग नहीं एवं स्वतंत्रता भाव में सम्मान पाइबा सहित पोजिशनिंग रे आसीथिले एवं समाने मध्य मेडल पाइथिले जोटा कि आम ओडिशा पई गोटे बहुत बड़ गर्व और गौरवर कथा एनु निश्चित भाव में आज ये संभावना भितर एठी जो उपस्थित हुआ समस्त मोर छात्र छात्री भाई भाई मैंने एठी अछंती तांको आंतरिकता शुभेच्छा जनाउछि एवं निश्चित भाव में आम समस्ते से गोटे मिशन रे अछंती एवं सरकार मध्य आपण मानकर प्रति जेभली भाव में जीवनर निजर भविष्य तैयारी करने सहित ओडिशा सहित मिसिकी काम करने एवं विशेष करके देशर सुनाम आने आपण मैंने जो आशा रखिंट आज ये एक आईटी क्षेत्र में यह निश्चित भाव में आगक आमको दिग्दर्शन देवा सहित आपण मानकर भविष्य बढ़ जो थे कि आगामी दिन में गोटे अर्थनैतिक प्रभाव एते इंडिविजुअल सहित गोटे राज्यर जो आज आम गोटे बड़ मिशन नौ जे आमको $500 बिलियन इकोनॉमी आम 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा परिवार जो आम बहुत बड़ गोटे संकल्प नहीं साकार करने आज ये जो परिस्थिति एवं आमको अपॉर्चुनिटी आज आम पाखक आसूची ताहार सुजोग आज आम सरकार केवे भी हाथ धरा करेंगे नहीं एवं यह आधार कर आम समस्ते जदि मिलित भाव में कार्यक्रम को सफल करने सरकार सहित उभय कोलाबोरेशन रे आमको जीवाई पड़ो ताहले आमे आम स्वप्न निश्चित भाव में सफल हम एठी जेतेबेले सिंगापुर रे स्वप्नेन्दु महांती सहित आलोचना रे एवं ये कार्यक्रम को किभली भाव में जड़े ओडिया हिसाब से निजर जन्ममाटी रे किभली भाव में एक सफल नेतृत्व से दे पारिबे ओडिया पिलांकु एथिरे संपृक्ति करैकरी समानकर ये कार्यक्रम में लगे पारिबे एवं आर्थिक
ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି କେମିତି ଏଥିରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ନୂଆ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇକି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳ ସେ ହେବେ ନାହିଁ, ସଫଳ ଆମେ ହେବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ହେବେ। ଆମ ସରକାର ଏଥିରେ ସହଯୋଗରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ MD ଏବଂ CEO ବାଜାଜ ଏଲିଆନ୍ସର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତପନ ସିଙ୍ଗଲଜୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ ଯେ 7,000 ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ ବାଜାଜ ଏଲାଏନ୍ସ ଏ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଏ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଏ ଆଗକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ଲେଇଂ a key part in the Viksit Bharat 2047 mission, helping India become a global economic leader. समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दूची एवं आज आपण माने एठी एते समय धरि उपस्थित रहिले ए कार्यक्रम रे उपस्थित रही सफल करबा पई संकल्प लेछंती। आगामी दिन में निश्चित भाव में ओडिशा ए क्षेत्र में भारत वर्ष में अर्थनैतिक दृष्टिकोण निश्चित भाव में भारत वर्षर श्रेष्ठ 5टी राज्य भितर स्थानित हब एवं आमे विकसित भारत ग्रोथ इंजिन हिसाब से काम करवा तार नेतृत्व नहीं पारिबा ये आशा भरोसा निश्चित भाव में रखिकी मुझे विदाय नौची। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। जय हिंद। वंदे उत्कल।